Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
इंग्लिश नहीं है, हिंदी। Anybody has English on the mobile? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prabhu Tavir Viru Trinagul Magavare Kato Radam Se Masakeru Padruta Kvachit Tu Gardar Vapuram Prapashyati Kvachit Kvachikcha Surayo Mukhagraham Prabhuta Viro Trinagul Magavare Katho Radam Se Masakeru Padruta Kvachit Tu Gandharva Puram Prapashyati Kvachit Kvachikcha Surayol Mukhagraham Prabhuta Viro Trinagul Magavare Kato Radam Ser Masakeru Padruta Kvachit Tu Gandharva Puram Prapashyati Kvachit Kvachikcha Surayol Mukhagraham Oh, इसमें आ रहा है Kathoradam Se Masakeru Padruta Chitu Gandharva Puram Prapashyati Kvachit Kvachikcha Surayol Mukhagraham Prabhu
Viurate Katoradam se masakerupadruta Kachikcha suryo mukagraham Bhuta virutrita gulma bhavare Toradam ser masakerupadrutaha Kvachit gandharva puram prapashyati Kvachik chakshurayol mukagraham Mata Prabhuta a very large number Virut of creepers, Trina of varieties of grass, Gulma of thickets, Ghavare in bores, Kathora, cruel, Damsai by bites, Masakai by mosquitoes, Upadruta disturbed, Kvachit sometime, too, but Gandharpuram, a false palace created by the Gandharvas, Prapashyati, he sees Kvachit, and sometimes, Kvachit, sometime, Cha, and Asuraya, very quickly, Ulmukha, like a meteor, Graham, a fin. Translation, in this forest there are dense bowers composed of thickets of bushes, grass and creepers. In these bowers the conditioned soul is always disturbed by cruelly biting mosquitoes, endless people. Sometimes he is an imaginary palace in the forest, and sometimes he is bewildered by seeing a fleeting fiend or ghost which appears like a meteor in the sky. Purport by Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki. Material household is actually a whole of fruitive activity. To earn a livelihood, one engages in different industries and trades, and sometimes one performs great sacrifices to go to higher planetary systems. Apart from this, at least envious is engaged, everyone is engaged in earning livelihood in some profession or occupation. In these dealings, one has to meet many undesirable people, and their behavior is compared to the biting of mosquitoes. This creates a very undesirable condition. Even in the midst of these disturbances, one imagines that he is going to construct a grand house and live there permanently, although he knows that he cannot. Gold is compared to be a quickly fleeting fiend which appears like a meteor in the sky. It displays itself for a moment and is then gone. Generally, karmis are attracted to gold or money, but these are compared herein to ghosts and witches. Om Jnana Timirandasya Jnanandana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Sri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namastite
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sitidevi Pranamami Haripriye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaivacha Paritana Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This is at least direct or translation? Hare Krishna. So I'd like to welcome you all to our Srimad Bhagavatam class this morning. Hare Krishna. हम आप सभी का इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत करते हैं. So this is the conversation of Rahugana and Jat Bharat. तो यह वार्तालाप संवाद राजा रघुगण और जट भरत के बीच में हो रहा है. Is giving some allegorical points about material world. तो वह भौतिक संसार का एक प्रतीकात्मक उदाहरण दे रहे हैं. How material life is in itself very, very difficult. तो कैसे एक भौतिक जीवन अपने आप में बहुत ही दुष्कर है. And he's giving a comparison like when somebody enters into a forest. और वह यह तुलना से दिखा रहे हैं जैसे कि अगर कोई एक जंगल के बीच में भ्रमण करता है. Just like in the forest, there are many dacoits. जैसे कि एक जंगल में बहुत सारे डाकू लोग होते हैं. Plunderers. बहुत सारे ठग होते हैं. Jackals. बहुत सारे tigers. भेड़िए होते हैं, शेर होते हैं. Cold, heat. Cold, very cold. जैसे बहुत सारा ठंड होता है. Heat also. बहुत सारी उष्णता भी होती है. And muddy water. So कीचड़ वाला जल होता है. Mosquitoes. बहुत सारे मच्छर होते हैं. Biting. बहुत सारे मच्छर काटते रहते हैं. So this like this forest is so dangerous, painful. यह सब हमें दिखाता है कि जंगल कितना हानिकारक, कितना धोखादायक. And life is also like that. और हमारा जीवन भी उसी प्रकार से है. And what is the mosquitoes compared to? We are beaten by mosquitoes in the forest. तो जो मच्छर है वो हमारे जीवन में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? This is like envious people. They are always biting you. तो वह द्वेषी जनों का प्रतिनिधित्व करते हैं. जैसे हमेशा मच्छर काटते रहते हैं वैसे द्वेषी लोग हमेशा द्वेष करते रहते हैं. And these dacoits, plunderers, because government always taking tax from you. और जो ठग और चोर उचक्के लोग हैं वो हमारे सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं. तो सरकार भी हमसे बहुत सारे टैक्स लेते रहते हैं, कर वसूलते रहते हैं. उसी प्रकार से जैसे ठग लोग, डाकू लोग चोरी करते हैं. Jackal? This was Prabhupada is saying. जो सियार होते हैं, भेड़िए को पत्नी और बच्चों के रूप में यहाँ पे बताया गया है. पिताजी, पैसा. तो Asking for money. हमेशा बच्चे जो है वो पैसे के पीछे लगे हुए रहते हैं. So one become very disturbed by all these surrounding. तो कोई एक जन हमेशा इस वातावरण में बहुत विचलित होते रहता है. Bhakti Thakur is saying that when my body drops dead, it will become the feast for the jackals and the vultures. तो भक्ति विनोद ठाकुर यह कहते हैं कि जब मेरा मृत्यु हो जाएगा तो मेरा जो शरीर है वो सारे जंगली प्राणियों के लिए एक बहुत ही अच्छा फीस्ट बन जाएगा. And they will be delighted. और वो सब बहुत खुश होंगे.
and they will enjoy a big feast upon my body. और वह सब मेरे शरीर का एक बहुत ही अच्छा भोजन स्वीकार करेंगे. And most amazing is my family members will have the same destination. और सबसे आश्चर्यकारक बात यह है कि मेरे परिवार के जो लोग हैं, मेरे स्वजन, उनका भी यही हाल होगा. So life is really full of miseries. तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही कष्टमय है. But Maya covers our intelligence and make us think, now we are okay, we are fine. लेकिन माया जो है वो हमारे बुद्धि के ऊपर आवरण डाल के हमें ये प्रतीत करती है कि मैं अभी बहुत स्वस्थ हूँ. Maya is as two-faced, avarnatmika and prapshetatmika. It pulls you down and covers your intelligence. तो माया के दो विशेष रूप है, एक है आवरणात्मिका और दूसरा है प्रक्षेपात्मिका. Pulling and covering. तो एक जो है वो खींचते रहती है और दूसरा जो है वो आवरण कर देती है. There was a circus going on. Circus, you know, circus? तो एक बार एक सर्कस चल रही थी. So some people came to watch. तो कुछ लोग वो सर्कस देखने के लिए आए. You have to pay the ticket and to go inside to watch. तो उन लोगों को सर्कस देखने के लिए टिकट निकाल कर अंदर जाना था. So one by one. तो एक के पीछे एक. One by one, okay? So one guy he paid a ticket and went inside. तो एक व्यक्ति था जिसने टिकट खरीदा और वह सर्कस के अंदर प्रवेश. And when he was there, he could not see anybody. He said, "What's happening here?" और जब वो अंदर घुसा तो उसने कुछ भी नहीं देखा. And then suddenly two big clowns came. तो Clown, we say, right? A circus, they make face like. So अचानक दो बड़े जोकर वहाँ पे प्रवेश किए. And they start smashing him. And side, boom, boom, and that guy became completely blue. और उन्होंने उसकी बहुत जोरदार पिटाई करना चालू कर दिया और उसका चेहरा पूरी तरह से टूट गया. You looking for circus? This is circus. Boom, boom. तो वो यह कहते हुए उसकी धुलाई कर रहे थे कि तुम सर्कस देखना चाहते हो, लो देखो ये सर्कस है. And then he went outside. When he went outside, he left, and his other people asked him, "So how was it?" "Oh, very nice." तो जब वह बाहर आया तो बाकी लोग उससे पूछताछ करने लगे कि ये सर्कस कैसी थी. तो उसने उसका जवाब दिया कि सर्कस बहुत अच्छी थी. And then the other guy also put a ticket and went inside to watch. He also got the same thing. Boom, boom, boom. तो उसका जवाब सुनकर दूसरा व्यक्ति भी टिकट खरीद कर अंदर गया और उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया गया. And he also came out. His other people asked, "How was it?" "Oh, very nice." और वह भी बाहर आके बोलने लगा कि यह सर्कस बहुत ही अच्छी है. People they deny, they don't admit that this life is full of suffering. They are thinking that, "Oh, it's very nice." तो किसी ने भी यह स्वीकार नहीं किया. जैसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया वैसे हम लोग भी ये स्वीकार नहीं करते हैं कि ये जो जीवन है वो कष्टमय है. हम सब सोचते हैं कि ये जीवन बहुत ही अच्छा है. But this verse is full of suffering. Full of suffering. लेकिन ये जो जीवन है, ये जगत है, वो बहुत ही कष्टमय है. We are attacked. People are attacked by many elements. लोगों के ऊपर बहुत सारे तत्वों से आक्रमण किया जाता है. Just like Markandeya Rishi, he met the Supreme Lord one time. He paid his obeisances. But then the Lord said, "I'll give you some vardhan, benediction."
साक्षात भगवान से मिले और भगवान ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। He said, I don't need anything, but one request I'm going to ask you. तो मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक चीज आपसे मांगना चाहता हूँ। And this okay. What he said? I just please allow me to see your this material nature, this Maya. How does it work? तो उन्होंने भगवान से यह प्रार्थना की कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो माया शक्ति है वो कैसे कार्य करती है। And the Lord had a smile. I said, Lord was thinking, what is he asking? The Lord was smiling, right? तो भगवान जो है अपनी स्माइल देते हुए सोच रहे थे कि ये क्या मांग रहा है। So be it, Tathastu. तो भगवान ने उनको कहा कि तथास्तु, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो। He said Tatha iti, means same like Tathastu, okay? So then the Lord left. He went to Badarika-ashram. तो उसके पश्चात भगवान वहाँ से निकल गए, बद्रिकाश्रम चले गए। But after some while, Markandeya Rishi was doing his tapasya meditation, and suddenly there was kind of pralay, deluge, pralay. जब भगवान निकल गए तत्पश्चात मार्कंडेय ऋषि जब अपने तपस्या में मग्न थे, तो कुछ ही क्षणों के पश्चात अचानक से एकदम प्रलय चालू हो गया। Start flooding. और सब तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ गई। And people were screaming and getting drowned into that flood. और जो लोग थे वो एक दूसरे के प्रति चिल्ला रहे थे, जोर-जोर से शोर शराबा कर रहे थे और उसमें डूब रहे थे उस बाढ़ में। Houses, trees, rocks, they were all getting kicked by the big waves. तो जितने भी घर थे, बड़े-बड़े पेड़ थे और जितने भी पहाड़ वगैरह थे वो सब उस बाढ़ के कचाटे में आ गए थे। People were screaming. तो लोग बहुत ही शोर शराबा कर रहे थे। And Markandeya also was getting drowned into the water. और मार्कंडेय ऋषि भी उसी में डूब रहे थे। And he became so tired, thirsty and hungry, and then he was tossed by the waves. और एकदम भूख और प्यास से वो बहुत उनका हाल बेकार हो गया था और अलग-अलग तरंगों से वो एक इधर से उधर उछाले जा रहे थे। And he was attacked by the timingalas, the big sharks, and the fish. और उनके ऊपर बड़े-बड़े शार्क और तिमिंगल आदि मछलियों ने आक्रमण कर दिया। And tossed by the waves, sometimes would go down and sometimes up, again and again, high and up. तो कभी ऊपर कभी नीचे ऐसी समुद्र की जो तरंगे थी उनको उछाल रही थी। So this is comparison of this material nature, material world. तो यह जो है ये भौतिक दुनिया का तुलना किया गया है। Same thing. We also getting attacked by timingalas and also tossed by the waves. तो जैसे हम भी कभी बहुत बार तिमिंगल आदि मछलियों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं और कभी-कभी तरंगों से ऊपर नीचे उछाले जाते हैं। Thirsty, hungry, tired. भूखे, प्यासे और थके हारे होते हैं। So this is Markandeya Rishi. He wanted to know how does this work, how this material nature, how Maya works, and Krishna's, because he had asked, Krishna showed him. तो मार्कंडेय ऋषि यह देखना चाहते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह व्यवस्था की ताकि वो देख सके कि माया जो है, माया शक्ति वो कैसे कार्य करती है। And then suddenly he saw a small island, and there was a tree, and there was an infant there, a small child. और अचानक से उन्हें एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया और वहाँ पे एक वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे and a small baby on the leaf of that tree. उस वृक्ष के नीचे एक छोटा सा बालक एक पत्र के ऊपर था। So beautiful.
बहुत ही सुंदर दिख रहा And then he was swallowed when the child was inhaling, and he was swallowed, went right into the body of that mouth of that child. तो जब उस बालक ने वो निगलना चालू किया तो मार्कंडेय ऋषि साहब को एकदम उस बालक के मुख से अंदर प्रवेश किए उनके देह में. And then he saw inside the body all these universes, all the planets, everything, all the elements he saw. और जब उन्होंने उस बालक के मुख के अंदर प्रवेश किया तो तत्पश्चात उन्होंने देखा कि अंदर बहुत सारे जगत है और बहुत सारे ग्रह है. Like Yashoda Maya, what she saw in the mouth of Krishna. जैसे यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में बहुत सारे ग्रहों को देखा था. And when the child exhaled, he was outside the body. और जब उस बालक ने अपना श्वास बाहर की तरफ फेंका तो वह ऋषि भी उस श्वास के साथ बाहर निकल गए. Acharya also explained that this child who was on the leaf of the tree, it was sucking its own toe. और आचार्यगण यह बताते हैं कि जो यह बालक था वह अपने पैर के अंगूठे को चबा रहा था, चूस रहा था. So they explain why. तो वह इसका कारण बताते हैं. Krishna is seeing that so many people are coming to my feet. Why? And then so many people are coming to my feet, surrendering to my feet. So let me also taste. How does it taste? Let me try also how my feet, my toe actually taste. So that's why he was sucking on its toe. तो आचार्यगण इसका बताते हैं कि तात्पर्य क्या है. बहुत सारे गण, बहुत सारे ऋषि मुनि और बहुत सारे महात्मा गण मेरे चरणों का आश्रय लेते हैं. तो ऐसी क्या चीज़ है मेरे चरणों में कि उन्हें इतना टेस्ट मिलता है, उनको इतना रुचि मिलता है. तो मुझे इस खुद को इसका परीक्षा करने दो कि मेरे चरणों में ऐसा कौन सा रुचि होता है, कौन सा स्वाद. So Markandeya Rishi again, he was tossed, he was out of the body of Krishna. तो जब मार्कंडेय ऋषि भगवान कृष्ण के शरीर से बाहर आए तो अगेन फिर से वह समुद्र के लहरों से इधर-उधर उछाले गए. And he found himself back in his meditation. और फिर से वह उन्होंने ये प्रतीत किया कि वह अपने ध्यान में मग्न है. So now he's got it. What he wanted to see, the works of Maya, how Maya fraction, how Maya works. तो फिर उन्होंने यह महसूस किया कि जो वह देखना चाहते हैं कि माया कैसे कार्यान्वित होती है. And then he got it, and then Lord Shiva came. Lord Shiva and Parvati, they were coming. तो They saw him. उन्हें जो वरदान प्राप्त हुआ उसके तत्पश्चात उन्होंने यह देखा और उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ पे उपस्थित थे. Shiv Parvati, they were attracted by this Markandeya Rishi Muni. तो भगवान शिव और पार्वती जो है वो इस मार्कंडेय ऋषि की तपस्या से प्रसन्न थे. And then Shiva asked him, because of his meditation, he was in trance. He forgot, he did not realize that Shivji has come. लेकिन उनके ध्यान में वो समाधि के स्तर पे थे तो इसलिए उनको यह पता नहीं चला कि भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ पे प्रकट हुए हैं. And then Lord Shiva asked him, I'm going to give you a benediction. He asked me any benediction. तब वो भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि से यह पूछा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ तो आप जो चाहे वो वर मन मुझसे मांग सकते हो. What did he ask? तो मार्कंडेय ऋषि ने क्या पूछा? Now he has seen the works of material nature of Maya, no more. तो उन्होंने शिव जी से यह कहा कि मैंने अभी भगवान की जो माया शक्ति है उनका कार्यकलाप देख लिया है, तो अभी मुझे इस पश्चात मुझे और कुछ नहीं चाहिए. He asked a benediction from Lord Shiva that he would engage in devotional service to the Supreme Lord for all life, forever. तो उन्होंने भगवान शिव से यही वरदान मांगा कि अभी उनका जो उर्वरित जीवन था, जो शेष जीवन था, वह पूर्ण जीवन वो भगवान की निस्वार्थ भगवान की भक्तिमय सेवा में वो रत रहे.
Maya give us kick in this world. तो माया जो है वह हमें प्रताड़ित करती है इस दुनिया में. It's like you have a soft teacher and a hard teacher. Sometimes teacher is soft and sometimes teacher are very hard. तो कभी-कभी जो हमारे गुरुजन है, जो हमारे शिक्षक है, वह बहुत ही कड़क रहते हैं और कभी-कभी वह बहुत मृदु भी रहते हैं. You had this experience, right? Especially in primary school. So a soft teacher give you the lesson first and then the exam. But a hard teacher give you the test first, and after getting the test, then you learn your lesson. तो जो मृदु शिक्षक होते हैं वह प्रथम शिक्षा देते हैं और उसके पश्चात वह उस शिक्षा के आधार पर उनकी परीक्षा लेते हैं. लेकिन जो कठोर शिक्षक होते हैं वह शिक्षा से गुजारते हैं और उसके पश्चात उनको कहते हैं कि आप परीक्षा से सीखो कि इससे क्या जो शिक्षा आपको प्राप्त हुई है. So that hard teacher is Durga. तो जो कठोर शिक्षक है वह माता दुर्गा है. Is a hard teacher. He gives the test first, boom, and then you learn your lesson from it. तो जो माँ दुर्गा है वो एक कठोर शिक्षक के रूप में कार्य करती है. तो प्रथम वो परीक्षा लेती है और फिर उस परीक्षा से हमें सीखना होता है. Give the lesson. He gives the test first. He gives the hard test, and then from that punishment, hard punishment, and then from that we learn our lesson. तो जो माँ दुर्गा है वो पहले बहुत ही कठोर परीक्षा लेती है हमारी और उस परीक्षा से हमें शिक्षा प्राप्त करनी होती है, हमें सीखना होता है. She is the superintendent of this material world. Superintendent, like in police they have superintendent. तो इस भौतिक जगत की अध्यक्ष है. हाँ. Is adhyaksha, right? Superintendent. So she is the adhyaksha, yeah, superintendent of the jail keeper, we can say. You know. तो वह इस तुरुंग की अधिकारी है. Yeah, and this world is also compared to be like a shop. Shop. When you go to the shop, whatever money you have, the amount of money you have, and that's much you will get from the shop. तो इस दुनिया को जो है वो एक दुकान की तरह भी संबोधित किया जाता है. जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे जितना हमारे पास धन है उतना ही हम खरीदारी कर सकते हैं. And the shopkeeper is Durga Ma. और उस दुकान की जो संचालक है वह दुर्गा है. Whichever body you want, that body you will get. If you want the body of a dog, of a cow, monkey, donkey, you will get. तो आपको जो भी शरीर चाहिए वो वहाँ पे मिल जाएगा. आपको कुत्ते का शरीर चाहिए या बिल्ली का या बंदर का या गाय का, जो भी चाहिए वह शरीर आपको प्राप्त. Sometimes they say, people say business is down now, business due to corona, business is down. But Durga Ma's shop is working successfully and over time also. तो कभी-कभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग कहते थे कि हमारा बिजनेस है, जो हमारा व्यापार है बहुत ही अभी मंदी में चल रहा है, बहुत डाउन चल रहा है. लेकिन माँ दुर्गा का जो व्यापार है वो हमेशा तेजी में है और कभी-कभी तो वो डाउन नहीं, ओवर टाइम भी करते हैं. कोरोना काल में भी चल रहा है. Yes, over time, you know, full time, full of profit, you know. So this is, and sometimes people praying to Lakshmi to get money. It is not Lakshmi she was giving; it is Durga Ma. तो कभी-कभी लोग जो है माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उनसे मांगते हैं कि हमें धन चाहिए. लेकिन उन्हें जो धन देने वाली व्यक्ति है वो माता लक्ष्मी नहीं बल्कि माँ दुर्गा है. And this dhan that the demigods are giving, they are not real dhan; they are poison. और जो धन उनको प्राप्त होता है वह असली धन नहीं है बल्कि वह एक विष है.
poisonous. So, just like Lakshmi Mata, what is the Vahan of Lakshmi Mata? Ullu. So if we get money, we become Ullu also. तो जैसे माता लक्ष्मी का जो वाहन है वह उल्लू है, तो उसी प्रकार जब हम धन प्राप्त करते हैं भौतिक जगत में तो हम उल्लू बन जाते हैं। Ullu doesn't see, right, during the daytime. तो Night only. So it makes the people blind, with lots of wealth to become blind. जिस तरह उल्लू जो है वो सिर्फ रात में ही देख सकता है, वो दिन में उसकी दृष्टि बहुत ही कमजोर हो जाती है, उसी प्रकार जब लोगों के पास धन आता है तो वो अंध हो जाते हैं। Brahmaji said, one who is not Krishna conscious, his wealth become like thief, his house become like a jail, and his family members become like the chain, you know, the hatkadi. तो ब्रह्मा जी ने यह कहा है कि जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उनकी जो संपत्ति है वह चोरों की तरह है, और उनके जो उनके जो परिवार वाले हैं स्वजन वह Hatkadi. उनके जो स्वजन है वो बेड़ियों के समान है। Krishna says in Bhagavad Gita about the 8 material elements, right? They are apara prakriti. Bhumirapanolavaya kamanubodhirevacha. These are 8, they are apara prakriti. तो भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि जो भूमि आप अनल वायु खम मनोबुद्धि रेव, ये जो अष्ट धातु है वो यह अपरा प्रकृति के तत्व है। And he's saying that also that there is another element which is para prakriti. और उसी तरह से जिस तरह अपरा प्रकृति है उसी तरह दूसरा तत्व भी है जिसको परा प्रकृति कहा गया है। Aparayam itastvanyam. Then prakritim vidi me param. Jiva bhuta mahabhava. Tadetam darte jagat, right? So is this para prakriti is a jiva. तो जो परा प्रकृति है वह जीव है, and is struggling and also is exploiting material nature. और वह जो जीव है वह भौतिक जगत से संघर्ष कर रहा है और उसे exploiting. शोषण करने का प्रयास कर रहा है। Understand this point? Jiva is exploiting material nature. तो जीव जो है वो भौतिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास कर रहा है। You have material nature, lower, and then Jiva, and then Supreme Lord. But Jiva is exploiting material nature, enjoying, exploiting, and taking so many things. तो जो सबसे नीचे है वो भौतिक जगत है, उसके ऊपर जीव है और उसके ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो जो जीव जो है वो अपरा प्रकृति भौतिक जगत को शोषण करते रहता है। And drilling the earth, taking the oil, taking the gold, and so many things they are exploiting. जैसे वो जमीन खोद के तेल निकालना चाहता है और ऐसे इस तरह से बहुत सारे दृष्टि से वो भौतिक जगत का शोषण करना चाहता है। But one has the right to milk the cow, but not exploit the cow, right? तो जैसे कि अगर किसी के पास गाय है तो वो गाय का दूध निकाल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो गाय को शोषण कर सकता है। You're allowed to use, but not exploit. आपको इस्तेमाल करने का हक है, लेकिन आप उसका शोषण नहीं कर सकते। Like everybody has their quota. जैसे सबके पास अपना अपना निर्धारित भाग है। Quota is what is a quota for human being? तो इंसान का क्या हिस्सा है? Upanishad speaks about quota. What is a quota for human being?
Who knows? The milk is not a quota for the cow. The cow doesn't bring the milk. So the milk is not quota for the cow. It is for the bachra, or for human being. But what is quota for human being? तो जैसे दूध जो है वह गाय का हिस्सा नहीं है, गाय के लिए वह नहीं है, वह एक इंसान बछड़े के लिए और इंसान के लिए है। तो उसी तरह महाराज जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि ईशोपनिषद में कहा गया है कि इंसान के लिए निर्धारित कोटा है, निर्धारित हिस्सा है, तो वह हिस्सा क्या है? Yes, human beings' quota is devotional service. That is his quota. तो मनुष्य का जो हिस्सा है वह भक्ति है। His quota is bhakti, is to be compassionate. That is his quota. So, but here Krishna is saying in Bhagavad Gita that living entity, a jiva, they are exploiting material nature. लेकिन यहाँ पे भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो जीव है वो भौतिक प्रकृति का शोषण करते रहता है। Is a jiva really exploiting material nature? Is he able to exploit material nature, or material nature is exploiting jiva? तो वास्तव में क्या जीव भौतिक जगत का शोषण कर रहा है या भौतिक जगत जीव का शोषण कर रहा है? Jiva is exploiting. Jiva wants to exploit material nature, and ultimately material nature exploits Jiva. Yes. Krishna is being sarcastic here in this verse. He's being sarcasm. Sarcasm, you know sarcasm? तो कृष्ण यहाँ पे उपहासात्मक रूप से यह कह रहे हैं कि जीव जो है वो भौतिक प्रकृति का शोषण करता है। It seems that it looks like jiva is exploiting material nature. तो हमें यह प्रतीत होता है कि जीव भौतिक जगत का शोषण कर रहा है। But in fact, material nature is also exploiting jivas. लेकिन वास्तव में जो है जो भौतिक प्रकृति है वह जीव का शोषण कर रहा है। Just example, corona. तो इसका उदाहरण हम कोरोना से सीख सकते हैं। You know what happened in the whole world due to corona? क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना की वजह से So many people panic, lockdown, cannot go out, died due to corona. लॉकडाउन लगने की वजह से बहुत सारे लोग दुखी व्यतीत हो गए और ना वो इधर उधर जा सकते थे, ना घूम फिर सकते थे। And during corona time, lockdown, human jiva used to lock down the animal, but those time the animal were outside and human were inside. तो जैसे हमारे दैनंदिन जीवन में हम इंसान प्राणियों को बंद करके रखते थे, लेकिन इंसान खुद बंद हो गया और सब प्राणी जानवर जो है वो बाहर घूम फिरते थे बहुत आसानी से। And the animal they were laughing at the human being. और जो सारे जानवर हैं वो इंसानों के ऊपर हंस रहे थे। Just see. देखो You used to lock us down, now you're inside. देखो हमें बंद करने चले थे, अभी खुद ही बंद हो गए। During the first session of the lockdown, I was in the first time lockdown, I was in Noida. तो जब सर्वप्रथम लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त मैं नोएडा में उपस्थित था। 3 months. 3 महीनों के लिए। Room, temple, room, temple. 3 महीनों के लिए केवल मैं अपने रूम से मंदिर तक और मंदिर से रूम तक ही घूमने फिरने के लिए सीमित था। And I was watching outside. Is this highway there? No? The road, highway, flyover. That's only you can see from the window. और केवल मैं एक रोड जो खाली पड़ा था, जो हाईवे था, वही देख पाता था, उसके अलावा और कुछ नहीं देख पाता था। And sky was blue. Sky was blue. और जो आकाश जो था वो पूरी तरह से नीला था। And it was not so hot. It was cool. It was summer. It was May, months of May, but it was cool. और मई महीने में भी वह बहुत ही ठंडा था, बिल्कुल वातावरण में गर्मी का एहसास नहीं। Not thanda, but it was okay.
was not so hot. And Yamuna was also bluish. Yamuna water was, I heard it was blue. Because there was no pollution, there was no, machine was not going, running. All this car just completely stopped. और यमुना का जल भी तब नीला नीला प्रतीत हो रहा था, ऐसे मैंने सुना, क्योंकि तब कोई भी प्रदूषण वातावरण में उपस्थित नहीं था. And the animals were outside, they were enjoying. And humans were locked down. जो भी जानवर बाहर घूम फिर रहे थे वह मौज मस्ती कर रहे थे, और इंसान जो है वह लॉकडाउन की वजह से अंदर बंद हो गए. So here Krishna is being sarcastic. He wants to say, he's being sarcasm means that human are exploiting, in fact its material nature is exploiting jiva. यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है वो उपहासात्मक रूप से यह हमें बता रहे हैं कि जीव जो है वो भौतिक प्रकृति का शोषण करना चाहता है, लेकिन असल में वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो भौतिक प्रकृति जीव का शोषण कर रही है. Just like one time I went to jail. Sorry. Did not go to jail, but to do some program in jail. Prison program. एक बार मैं एक कारागृह में एक कार्यक्रम करने के लिए गया था. And then we went inside. We were, I think Vishal Prabhu was with me also there. And that jail was in Nagpur itself. तो मैं नागपुर के जेल में, नागपुर के कारागृह में. It's a big one, huh? Nagpur, right? सेंट्रल जेल. Yes. And we went inside, and the jailers, the prisoners, they were all wearing that hat, uniform, and they were themselves driving and cooking and cleaning, and managing, and it looks like they're managing the prison themselves. तो मैं जब वो कारागृह में गया तो मैंने वहाँ पे यह देखा कि जो तुरुंगवासी थे, जो कैदी थे, वो एक पर्टिकुलर अपना पोशाक पहने हुए थे, और सारा जो वहाँ पे जितना भी खाना बनाना हो या साफ सफाई करना हो या उसका व्यवस्थापन करना हो, वो सब वो खुद ही कर रहे. तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये कैदी ही सब व्यवस्थापन कर रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं. It looks like, but in fact they are not. तो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था कि ये कैदी लोग ही ये सब संभाल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में यह ऐसा नहीं था. Similarly, it looks like jiva is exploiting, but not. तो उसी तरह से हमें यह प्रतीत होता है कि जो जीव है वो प्रकृति का शोषण कर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है. And in that prison, there was a hall, big hall like this, and they were all invited to be in the hall, and we were doing kirtan, and the prisoners were dancing and chanting, and they forgot everything. As if it was not a jail, it was just like a temple, that hall, that on that day. तो उस कारागृह में एक ऐसा ही बहुत बड़ा हॉल था, जिसमें कमरा था, जिसमें सब कैदियों को बुलाया गया, और फिर हमने वहाँ पे जोरदार कीर्तन चालू किया. तो जैसे ही कीर्तन में सब कैदियों ने सहभाग लिया तो वह नाचने गाने लगे और झूमने लगे, और हमें यह प्रतीत नहीं हो रहा था कि ये कैदी है, और वो सब भूल गए कैदी कि हम अभी जेल में हैं, ये तुरुंग में हैं. And I said, don't worry, you are in jail here, but the people outside, they are also in jail. तो उस वक्त मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, भले ही आप जेल में हो, भले ही आप इस कारागृह में हो, लेकिन जो बाहर जो लोग घूम फिर रहे हैं वो भी एक तरह से जेल में ही है. Right? This is a prison house, right? This world is a prison house. तो क्या आप सभी स्वीकार करते हैं कि ये जो जगत है वह एक कारागृह की तरह है? Yeah. Corona has reminded us that we were already in confinement in this world. Not only during Corona time. This world is a place of confinement. Right? We left the spiritual world and we were put in jail, so we were confined here under the guidance, not guidance, under the punishment of
Durga. तो यह जो भौतिक जो कोरोना का काल था वह हमें यह बताने के लिए, हमें यह दिखाने के लिए, हमें यह सिखाने के लिए था कि हम अभी भी इस भौतिक जगत में बंद किए गए हैं। हमने आध्यात्मिक जगत को छोड़ा और फिर हम इस भौतिक जगत में माया देवी के संचालन में यहाँ पे बंद किए हुए हैं, जैसे एक कैदी को जेल में बंद किया जाता है। We are confined already in this world, and again we're double confinement. We have to stay in house. We cannot go out. तो एक तरफ से हम एक पहले कैद में डाले गए हैं और उसके पश्चात फिर से एक और कैद हमें कोरोना काल में प्राप्त हुई, वो थी हमारे घर के अंदर। So similarly, Corona has actually reminded us, be careful, you are already confined in this world. तो कोरोना काल So the point is it looks like Jiva is exploiting, but material nature is also exploiting the Jiva. तो ये यहाँ पे बताने का तात्पर्य यही है कि हमें प्रतीत होता है कि जीव जो है वो भौतिक प्रकृति का शोषण कर रहा है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तव में भौतिक प्रकृति ही You have cyclone, tufan, flood, I know, all these, they're there. तो हम देखते हैं कि हम कभी कभी चक्रवात का अनुभव करते हैं या बाढ़ का अनुभव करते हैं या सुनामी का अनुभव करते हैं। And in the jail, all these prisoners were chanting and dancing, and they were in ecstasy. तो जब जेल में हम कीर्तन कर रहे थे तो ये जो सारे कैदी थे वह बहुत ही आनंद के साथ कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। And then we asked one of the prisoner to also speak his realization. तो तब हमने वहाँ के उपस्थित एक कैदी को एक कहा कि आप अपना जो रियलाइजेशन है वो बताइए। And he speaks, he's quoting so many verses from Gita. We were shocked. तो तब उस कैदी ने जब बोलना चालू किया तो भगवत गीता से बहुत सारे श्लोकों को उद्धृत कर रहा We were shocked. Many verses from Bhagavad, from Gita, he was talking and quoting verses. तो यह देखकर हम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसे भागवत के और गीता के बहुत सारे श्लोकों को जानता है। And at the end, before leaving, we were told that he was the greatest criminal in that jail. जब हम उस जेल से निकल रहे थे तो उसके पूर्व हमें पता चला कि वह जो है उस जेल का सबसे बड़ा कैदी है। Cadet is a criminal, khuni. गुनेगार, सबसे बड़ा जो गुनेगार है वही व्यक्ति था। But he was quoting many slokas from Gita. We were shocked. लेकिन बहुत सारे शास्त्रों से वो अलग-अलग शास्त्रों से वो बहुत सारे श्लोक वहाँ पे बता रहा था। So we see they were just in the jail, but the outside world is also jail. This is also a jail, the fortress of Durga. तो केवल जेल ही जो है वो जेल नहीं है, बल्कि यह बाह्य जगत भी है, या माता दुर्गा का किला जो है यह भी एक तरह से जेल ही है। Prabhupada said in a jail, sometime you get first class jail, prison house, you get a TV, you get a bed, you get newspapers, nice food. This is first class prison. तो कभी-कभी जो कारागृह होते हैं उसमें भी हमें उच्चतम कारागृह प्राप्त होता है, जिसमें बहुत ही अच्छा खाना मिल रहा हो और सोने के लिए पलंग हो और बहुत ही अच्छा टीवी वहाँ पे लगा हुआ हो। Second class, maybe sleeping on the floor. तो जो द्वितीय दर्जा का जो जेल है उसमें शायद हमें जमीन पे सोना पड़ सकता है। So then there's third class also. और उससे There's no facilities, just dark. और उससे निम्न स्तर के जेल में वहाँ पे कोई भी सुविधा का सभी सुविधाओं का अभाव होता है। वहाँ पे हमें बहुत ही कष्ट झेलने पड़ते हैं। Which one you would like? तो आप कौन सा पसंद करेंगे? It's all jail. लेकिन ये जो है वो सारे कारागृह ही हैं। You're in America, you're in Europe, you're in Russia, any country, any place, it is all jail. तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे रशिया हो,
आप किसी भी देश में जाइए, लेकिन आप अभी भी जेल में ही उपस्थित हैं। This is why Krishna is saying there is a superior planets. Our goal is to reach that place. तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत है और इस भौतिक जगत से अलग, और हमें वह प्राप्त करने की अपेक्षा रखनी चाहिए। Way to go there. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. It is more difficult to go to jail, you know. You have to kill somebody, you have to steal, you have to rape. It's not easy job. Do you think it's easy? तो उस जगत को प्राप्त करने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा। लेकिन हम जब देखते हैं कि जैसे अभी कोई जेल में जाना चाहता है तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। आपको किसी का खून करना पड़ेगा या कहीं पे चोरी करना पड़ेगा, उसके पश्चात ही आप कुछ गुनाह करना पड़ेगा, उसके पश्चात आप जेल में जा सकते हैं। गुनाह ना? It's difficult job. It's difficult. तो कोई भी गुनाह करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। Not easy job, right? To go and steal and break into the bank. Then you will go to hell. Then go to jail. But going back to Godhead, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Patram Puspam Phalam Toyam Yome Bhaktya Priyachate. Which one is difficult? Which one is easier? It's up to you now. जैसे हम देखते हैं कि कोई भी गुनाह करना बहुत मुश्किल काम है कि आपको जाके चोरी करना है या किसी का कत्ल करना है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन भगवत धाम जाना बहुत ही आसान है क्योंकि आपको सिर्फ महामंत्र का जप करना है। तो आप ही बताइए कौन सा आसान है और कौन सा मुश्किल है? This is easy. Yes, it's easiest. Then that question may come, if that is easy, that why people are not following that? तो फिर आपके मन में यह सवाल उठेगा कि अगर यह इतना आसान है तो लोग इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? Why? Because world is ulta. Ulta. Upside down. यह इसलिए है क्योंकि जो जगत है वो उलट रूप से यहाँ है। That's why people are not following. They want to follow a difficult path, that difficult one. तो ये दुनिया जो है वो उल्टी है, उनको कठिन रास्ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं आसान रास्तों से। Hare Krishna. Sri Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki, Nitaya Gaur Premanande. Any comments or any question you have? Yeah. Hare Krishna. Thank you for this wonderful class. My question is that we know that there is a grades of a jail, but still there are grades of A grade, B grade, C grade, J. Okay. So you said that, but somehow or other that we are looking for comforts in bhakti. So that mentality of looking for comforts in bhakti and then mental, our mind says that when we are comfortable, we can practice nicely bhakti. The mind is peaceful. There is no no uncomfort. Then if there is a comfort, then we can practice nicely chanting and something like that. So sometimes in that sense we focus on the comforts. So how to balance both? Yes. Comfortable life and हरे कृष्ण। तो मेरा प्रश्न ये था कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि सुविधाएं आएंगी तो मैं शायद भक्ति अच्छे से कर सकूंगा, इसीलिए हम जो हमारी सुविधाएं कम है हमारे पास में इसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और उस सुविधाएं बढ़ाने से हमको ऐसा लगता है कि मेरे भक्ति में मेरा मन स्थिर हो जाएगा और मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो सुविधाएं बढ़ाने के चक्कर में उन सुविधाओं में हम फंस जाते हैं। लेकिन ये भी वास्तविकता है कि
कुछ सुविधाएं जो हमको डिस्टर्ब करती है, जो कमी के कारण हम डिस्टर्ब होते हैं, तो उनको पूर्ण करना भी आवश्यक है। तो दोनों के बीच में संतुलन कैसे हो कि सुविधाएं तो हो ही शायद जो आवश्यक है, लेकिन हम अति में नहीं ना जाए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा करो, अति में भी ना जाए और हम वो जेल के कैदी भी बने रहे। इसके लिए कैसे क्या किया जा सकता है, ये मेरा प्रश्न है। Brahmachari life means performing austerities. तो ब्रह्मचारी जीवन जो है वो तपस्या के लिए बना हुआ है। And comfortable life, tapasya is meant to develop higher consciousness. और तपस्या का जो मकसद है, तपस्या का उद्देश्य है, वो हमारी चेतना को उच्च स्तर पर लेके जाने का। Right? Tapasya is meant for developing higher consciousness. तपस्या का जो उद्देश्य है, जो उसका मकसद है, वो हमारी चेतना को उच्च स्तर में स्थित करना है। So comfortable life and tapasya does not go well together. तो जो आरामदायी जीवन है और तपस्या है, वो दोनों आपस में ही विरुद्ध हटती है, वो कभी साथ में नहीं जा सकते। Tapasya means what? तपस्या का क्या मतलब है? You don't give the mind what the mind wants, right? You just refrain from giving the comfort to the body. तपस्या का अर्थ यह है कि मन को वह चीज ना दो जो मन मांगता है। Refrain from it. मन को उस चीज से दूर रखना है। But well, when you do also tapasya, it is in itself susukam avyayam, like Brahma Sokyam Tvanantam. Tapo divyam putrakan sattvam. Brahma Sokyam Tvanantam means tapo divyam. This is tapo is divyam. It is transcendental. लेकिन ये जो तपस्या है वो अपने आप में ही बहुत ही सुखदायक है, क्योंकि ये दिव्य है और ये ब्रह्म सौख्य Tvanantam. ब्रह्म सुख की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए ये तपस्या में भी एक प्रकार का आनंद है। So, yeah, we have to perform austerity, definitely, not to be just in our comfort zone, right? So tapasya has to be there, but the tapasya itself is tapodivyam, right? Brings happiness. तो हमें ये तपस्या करनी चाहिए, हालांकि हम आरामदायी जीवन में नहीं रहना चाहिए, हमको हमारे ऐशो आराम से बाहर निकलकर तपस्या करनी चाहिए, लेकिन ये तपस्या करते हुए भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है। Even if difficulties come and comfortable comes, then what Krishna is saying in Bhagavad Gita, matra sprasasta konteya sitasna sukadagada, so we tolerate them. Like winter and summer comes, so we tolerate, it will come and go. लेकिन अगर कभी हमें समस्याओं का सामना करना पड़े या कुछ ऐशो आराम का सामना करना पड़े, तब हमें यह सोचना चाहिए कि जैसे भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि मात्रा स्पर्शस्तु भवत्येय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापाय नित्य शांति तीक्ष्ण। तो आपको यह सहन करना पड़ेगा उसको। Krishna never says that when you become devotee, life will be straight go. No, it will be always like this. There will be always ups and downs. That's what Krishna is saying, but we learn how to tolerate them. That's the beauty of a devotee. तो भगवान ने यह नहीं कहा है कि आप भक्त बनने के बाद आपका जो जीवन है वो एकदम सरल हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि भगवान यह कहते हैं कि भक्ति में आने के बाद हमें यह सीखना पड़ेगा कि जो हमारे जीवन में ऊंच नीच आती है उसको कैसे सहन किया जाए। Krishna has used Nrsimhadev Bhagavan has used Prahlad Maharaj to teach us. See, it was Krishna who has put him in that condition. It was not his karma. See, my devotee, I've given so many tribulation in his life. Is still fixed in his devotional service. भगवान नरसिंहदेव जो है वह प्रहलाद महाराज के रूप से हमें यह सिखाना चाहते थे, प्रहलाद महाराज के उदाहरण से, कि एक भक्त के जीवन में जब ऊंच नीच आती है, जब कितनी कठोर समस्या आती है, तब एक भक्त उसको कैसे सहन करता है। There were many brahmanas that were getting tortured.
those times, but the demon, right? They would kill the brahmanas, torturing them. So, but here, Krishna is using a devotee, brahmana, devotee, to teach the world. See, I've given him so many tribulations, but still, he was fixed in his spiritual life. तो जब उस समय उस दैत्य ने बहुत सारे ब्राह्मणों को तकलीफ दी और बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या की गई, लेकिन भगवान अपने भक्त को इस्तेमाल करके हमें यह सिखाना चाहते हैं, भक्त के उदाहरण से हमें यह सिखाना चाहते हैं कि देखो कितनी भी समस्या आने के बाद आप भक्ति में स्थिर रह सकते हैं. Dharma rakshati, rakshata, right? If you protect dharma, dharma also will protect you. तो जैसे धर्मो रक्षति रक्षित है ऐसे कहा जाता है, तो अगर आप धर्म का पालन करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा. Okay, thank you. Any other points or any other comments? किसी का और कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी? We'll stop here. Thank you very much. Shri Prabhupada ki Nidai Gaur Premanande. इस जोर में सुंदर चंद्र गोस्वामी स्वामी महाराज की. तो हम सभी परम पूज्य महाराज का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने उनका दिव्य संग हमें प्रदान किया इस भागवत में. तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से महाराज को धन्यवाद देंगे.